everyone, welcome you all to Guru Mikhail channel. आपण निश्चित भाव में स्कूल कॉलेज किंबा विश्वविद्यालय रे इंग्राजी पढ़ी इंग्राजी व्याकरण जानती किंतु कौन आपण बेटर इंग्लिश कहवाई इच्छा करते कि जदि आपण इंग्राजी कहबार असक्षम कौन आज आपण इंग्राजी कहवाक चाहते कि हियर इज मिखाइल नाइक यू कैन स्पीक बेटर एंड स्पीक फ्रॉम नाउ ऑन स्पोकन इंग्लिश को ओडिया माध्यम रे प्रस्तुत करने समर्पित इंग्राजी मिखाइल चैनल आसतु आमने आग को बढ़ आज आमने प्रेजेंट सिंपल रो किछटी अंश को लेकिन चर्चा करने को जाउछि। आममानकर आजिर अभ्यास रे सब्जेक्ट्स रो साहाय्य आमने नेबा प्लुरल सब्जेक्ट्स आउ से माने हेले आई वी यू दे नेम्स प्लुरल these, those, my, our, your, his, her, their and nouns plural ये सब को आमे सब्जेक्ट्स भाव रे व्यवहार करि परिबा। आमाने आजिर वीडियो रे मुख्यतः एडवर्ब ऑफ डिग्री को किपरि भाव रे व्यवहार करा जाए ताहा आमानकर मुख्य टार्गेट रहिबो। एडवर्ब अर्थ आमे वर्ब जहाँ काम करे ताहाकु किपरि मॉडिफाई करि थाए किछति वर्ड ताहाकु आमे एडवर्ब कहि थाओ किंतु एडवर्ब विभिन्न प्रकार हेबारु तारो एडवर्ब रो आजिर आमानक टॉपिक हैला डिग्रीज को नै कि आमे चिंता करिबा। एडवर्ब ऑफ डिग्री रो काम हैला हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट वी डू समथिंग तार अर्थ हैला आमे कोन करूछे ताहा केते परिमाण रो करूछे को सीमा जाए आमे करूछे हिंदी रे आमे कहो हद तक को पर्यंत आमे करूछे जो भी कार्य आमे करूछे ताहाकू वर्णना करिवा पई केतोटी शब्द आमे प्रयोग करि थाओ जो द्वारा कर्तार क्रियार केते परिमाण से करे बा को पर्यंत ताहा करे ताहार व्याख्यान आमे देखिबा को आमानकर मेन स्ट्रक्चर रहिबो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एडवर्ब ऑफ डिग्री या पूर्वरु आमाने एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आमाने सब वीडियो ऑलरेडी कर सारी छे जदि आपण देखि नांती ताले दया पूर्वक से वीडियो गुडा को देखिबा पाए मो आपण को अनुरोध करे। आसंतु केतोटी उदाहरण ने आमे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एडवर्ब ऑफ डिग्री रो अभ्यास करिबा किपरि एडवर्ब मॉडिफाई करि थाए बा एडवर्ब ऑफ डिग्री काम को मॉडिफाई करि थाए एवं तार इंटेंसिटी बा इंटेंसिफाई को चेंज कर दिए सेही दिनस को आमाने चर्चा करिबा। उदाहरण हैला मु अत्यधिक माड मारे एटी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट होछि मु काहे कि आमे सब्जेक्ट मु को बोली कि भाबुछे कारण माड मारिबा कामटी करूछि मो तेणु काम जी करे से कर्ता तेणु मो होछि सब्जेक्ट मु कौन करुछि माड मारे तार माने मोर कामटी कौन आइठे माड मारिबा तेणु माड मारे ता होछि वर्ब आ ई जो माड मु किपरि मारे केते परिमाण रे मु माड मारे अत्यधिक तो अत्यधिक शब्दटी माड मारिवार परिमाण को व्याख्यान करे तार अर्थ माड़ मारिबा जो क्रिया अटे ताहाको मॉडिफाई करे किंबा तार एक्स्ट्रा आउरी एक मीनिंग आमान को देई थाए तेणु करी एई शब्दटी हैला एडवर्ब ऑफ डिग्री कारण यह केवल एडवर्ब नुह यह परिमाण को दर्शाए तेणु या को आमे एडवर्ब ऑफ डिग्री बोली के कहि था। आसंतु आमने या को इंग्राजी रे किपरि करा अनुवाद करा जाए तार व्याख्यान देखिबा। तो मु ताहाको आमानकर इंग्राजी रहिछि आई आमाने प्रथमे सब्जेक्ट नेबा दरकार ताहेला आमानकर स्ट्रक्चर तापरे सेकंड स्थान रे कोन आमानकु वर्ब नेबार अछि वर्ब टी एई वाक्य रे कोन अटे माड मारे माड मारिबा को इंग्राजी कहू आमे बीट राइट सो आई बीट द्वितीय चरण आम माने संपन्न करिछि तृतीय स्थान रे कोन रहिछि
adverb of degrees, right? Adverb of degree कोन अत्यधिक रो इंग्रजी हला extremely, right? So I beat extremely. Next example, right? आम्भे माने अतुलनीय भावे कथावार्ता करो. अतुलनीय माने जहार तुलना करा जाय पारे नाही, राइट? सो सेटा पई आमे इंग्रजी एक शब्द व्यवहार करो incredibly, राइट? प्लीज माइंड द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को ध्यान दियंतु. incredibly नाही या को आमे फॉरेनर्स हिसाब से चिंता करो और एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन incredibly, राइट? सो आमे जते बेले कथावार्ता होउछे उच्चारण को आम माने ध्यान देबा अति आवश्यक अटे. लिखला बेले जिते बेले स्पेलिंग रो आवश्यकता रही थाए सही परी कथावार्ता हला बेले उच्चारण अति आवश्यक रही थाए, राइट? सो अतुलनीय भावे सेटा को आमे इंग्रजी कहू incredibly, राइट? सो आसंतु एई वाक्य को आम माने खंड खंड करी चर्चा करिबा, राइट? तो आम्भे माने एइरा हला सब्जेक्ट, कारण कथावार्ता करंती एई कामटी एई वाक्य रे आम्भे माने करे, राइट? तो आम्भे माने कोन करंती? कथावार्ता करंती. किपरि भाबरे माने केते परिमाण रे आम माने कथावार्ता करू, राइट? को भाबरे सेटा हला अतुलनीय भाबरे. तेणु करी या हला आम मानकर adverb of degree in this sentence, right? आसंतु या को आमे इंग्रजी रो रूपांतरण करिबा, राइट? प्रथमे आम माने सब्जेक्ट नेबा दरकार. सब्जेक्ट हला आम्भे माने को इंग्रजी रे आम माने को we, राइट? तापरे कथावार्ता करंती, कथावार्ता करिबा को कोन कहू? टॉक, राइट? ता को आउ गोटे वर्ड मध्ये हम व्यवहार करि परबा कन्वर्सेशन, राइट? सो कन्वर्सेशन माने हला कथावार्ता करिबा, भाषार आदान प्रदान करिबा, राइट? तो तृतीय आमानकर सोपान हैला adverb of degree, सेटा हैला अतुलनीय भावरे जहाको आम इंग्रजी को incredibly. तो प्रथमे आम नेले सब्जेक्ट, तापर नेले verb 1, तापर तृतीय सोपान रे आम नेले adverb of degree, right? So we talk incredibly, आम्भे माने अतुलनीय भावरे कथावार्ता करंती. नेक्स्ट एग्जांपल, आपण बहुत खेलंती. केते खेलंती? केते परिमाणर खेलंती? सेटा हला बहुत, जहाको आमे adverb of degree बोली की कहि थाओ, राइट? सो आपण हला सब्जेक्ट, खेलिबा बा खेलंती ता हला verb, आ बहुत हला adverb of degree. सो आपण को आमे इंग्रजी कहो you, तापरे आम मानकर स्ट्रक्चर हिसाब रे नेबार अछि verb 1, सेटा हला play खेलिबा, a lot वा very much सेटा हला adverb of degree, राइट? सो एई दुईटा मध्यरु जे कोनोसी एक आपण शब्द खंड को बा फ्रेज को नै पारंती आपण, राइट? प्रीपोजिशनल फ्रेज बोली के हमें कहो, राइट? सो a lot, very much, not very much, right? Very much, right? So you play a lot, right? So you play very much, आपण बहुत खेलंती, right? आपण बहुत खेलंती से पर एक्सप्रेशन रे को जाय नै केंदी कहंती आपण बहुत खेलंती. से पर हम इंग्रजी कहला बेले एक्सप्रेशन दे की कहबा दरकार. सो you play a lot, you play very much, right? सो आपण बहुत खेलंती. आशा करूची बुझा पड़ुची. प्रथमे आमे नेले सब्जेक्ट, एटा हला you, तापर नेले verb 1, सेटा हला play, आउ adverb of degree आमे दुईटा शब्द खंड नै छै a lot आउ very much. Let's move into next example, right? तांको भाई माने यथार्थ भावरे व्याख्या करंती. यथार्थ भावरे एटा हला what extent, केते परिमाण पर्यंत से माने को जाय से माने व्याख्या करंती यथार्थ भावरे. कामा नाही संपूर्ण बुझिला भाले से माने पर्याप्त भावरे व्याख्या करंती. सेटा पई what extent हेरा ताहला यथार्थ भावरे. यथार्थ भावरे ताको आमे कोन कहि थाउ? fairly, right? तो तांको भाई माने
जार इंग्राजी हैला her brothers आमे her काई के नहीं छे his brothers मध्य आमे नहीं पारि थांते हाँ केवल झीर भाई माने बोली कहवा को चाहूँ तेणु आम her brothers लिखिले there is nothing wrong using his brother you can go ahead with it right तो आपण लगे पारंती पुओ मान को पाई जदी व्यवहार करबा पाई चाहउछंती पुओर भाई माने राइट ताहले आपण his brothers आपण लगे पारंती राइट मु केवल झियो मान को पाई व्यवहार कली भाबिली तेणु करी आमे her brothers बोली की यूज करे so you can move on with his brothers too right so आसंत तापरे आमान को verb नेवार अछि कोन व्याख्या करंती व्याख्या करबा कोन कहंती explain right so her brothers explain यथार्थ भाबरे त कोन fairly right so her brothers explain fairly तांको भाई माने यथार्थ भाबरे व्याख्या करंती next example तुमर संपर्क माने बहुत रोजगार करंती तुमर संपर्क माने को आम इंग्रजी कौन कहू your cousins right your cousins or your relatives that's a interesting word right आमे या पूर्वर मते व्यवहार कर सारी छे relatives माने संपर्क माने जो आमान को संपर्क रही छे it may be blood related or maybe distant relation right so your cousins or your relatives रोजगार करंती रोजगार करिबा को इंग्रजी रे हम कोन कहू it is not earn so while we studied in Oriya medium हम स्कूल रे व्यवहार करथलो earn no it is not earn it is earn right not earn it is earn right so your cousins earn enormously that's a huge word but anyways we have to learn right so enormously means बहुत right so your cousins earn enormously बहुत रोजगार करने माने they have a fat salary right it's a huge earning right the big earning बहुत से माने उपार्जन करंती सेटा को हमें रोजगार करंती बोली कहछ right so they earn enormously so प्रथम नेले आमे subject सेटा हला subject can be one word subject can be more than one word आमे already सीखि सारछ right तुमरो संपर्किय माने so दुईटा वर्ड आमे नेछ right so your relatives और तुमरो संपर्किय माने तापर नेले verb सेटा हला earn तापर आमान कर adverb of degree सेटा enormously so your cousins earn enormously next आपण मानक पाई काम केतोटी adverb of degree to how much or how what extent को दर्शाए सेही वर्ड केतोटी मु आपण को बाछि आपण मान को देई दैछि दया कर यार इंग्रजी रो वर्ड को ओडिया रे की परि भाव रे अर्थ रहिछि ताहा को आपण मुखस्थ करंतु आ जो स्ट्रक्चर आ माने सिखिछे सेही स्ट्रक्चर हिसाब रे ए वर्ड को व्यवहार करंतु for your kind information let me just have a read so that you can get how exactly it must be pronounced right almost barely completely deeply I'm just going line by line right enough fairly word को हमें व्यवहार कर सारी छे right hardly just nearly quite simply so somewhat too very enormously that we have already used it right entirely extremely एटा मध्ये आमे व्यवहार करी छे rather absolutely barely again I have just given it right so a word ro इंग्रजी अर्थ खुजंतु जो स्ट्रक्चर आमे सिखिछि से स्ट्रक्चर हिसाब रे याकू आपण व्यवहार करबा को बा प्रैक्टिस करबा को बोलंतु नाही मेक्स योर परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इंग्रजी रे बेटर कन्वर्सेशन करबा पाए एडवर्ब ऑफ डिग्री निहाती दरकार अटे जदि इंग्रजी रे कथावार्ता करू नाहंती ए वर्ड आपण जदि शिखिबे ताहले आपण शब्द रे धनी हेबे मने अछि आमानकर कोटेशन हैला
rich vocabulary, rich language. आपण जदि शब्द रे जदि धनी ताले भाषा रे धनी अटंती तेणु या को मुखस्त करबा को भूलंतु नाही. Learn as many as words that you can learn it, because rich in word, rich in language, rich in vocabulary, rich in or proficient in language. तो जेते बेले आपण धारा प्रभाव इंग्रजी कहया पई इच्छा करिवे वर्ड आपण मान को पाखे रहबा दरकार. तो निश्चित भाव रे आपण या शिखंतु एवं अभ्यास करंतु. मोर शुभ कामना आपण समस्त पई रही. जदि वीडियो भल लागिछि दया करी सब्सक्राइब करंतु. जदि सब्सक्राइब करिसंती hit the like button and encourage me. It encourages me when I see the like button, right? And don't forget to share to others, right? अन्य मान को बांटिवा पाई जमा भूलंतु नहीं, कारण बढ़िबा निजे एवं अन्य मान को बढ़िबार सहायता करिबा. That can possible when you share it to others. So share your relatives, share your children, share your parents, share your friends, and everyone that come in touch with you. Share in WhatsApp, share in Facebook, share in Instagram, and share in Twitter. Thank you very much. Stay tuned for next new videos. Guru Mikhail channel. I'm Mikhail Naik.